guys, welcome back to my channel and welcome to a new video. It's been so long since I last filmed a video. I am not even going to get into it, like I have just been going through it. So yeah, it's been a while since I sat down in front of my camera and filmed a long video. I missed you guys and I missed filming a video, and I thought कि आज के video में I'm going to do one of the most requested videos on my channel, and this is also a video that I love watching, and that is a bag collection. Yay! Finally I am doing this. I think मैंने last year कभी तो decide किया था कि मैं अपने ना सारे collection videos post करना start करूँगी अभी. So I have my bag collection, my jewelry collection, my perfume collection, so on and so forth. I just decided कि आज I will start with my bag collection video. This is going to be part 1 of bag collection because I have a lot of bags and these I have just collected over the years. So this video I just randomly picked up some bags to show you guys and some bags that I get a lot of questions on. So वो सारे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, and if you guys like this video I will do a part 2 very soon. So yeah, I hope you guys enjoy watching this video. Let's get started. Okay, let me show you guys some of my Coach bag. Okay, so this is the backpack that I got from Coach. This is actually Coach outlet. I got to know Coach and Coach outlet are two different things. मतलब Coach का ही Coach outlet है, but they have different designs and stuff, and that is cheaper. I have Coach का भी bag, but वो मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगी. वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, एंड जब तक मैं यूज़ नहीं करती तब तक मैं बता नहीं सकती कि वो वर्थ इट है कि नहीं. इसको मैंने यूज़ किया है, सो दैट इज़ व्हाई आई इंक्लूडेड दिस इन दिस वीडियो. सो दिस इज़ व्हाट आई कैरीड फॉर माई ट्रिप एज वेल. And again, such a good quality bag. First of all, it has a lot of zips. So यहाँ पे एक छोटा सा pocket है, यहाँ पे एक big pocket है, यहाँ पे एक और big pocket है. Then you can keep water bottle यहाँ पे. And इसके जो straps है, they are adjustable and very good quality के straps. It did not hurt my shoulder at all. मैंने इसको majority time use किया था Krabi में, and we fit in a lot of our stuff क्योंकि beach पे जाना था, तो beach पे जाने के लिए सामान लगता ही है. सब कुछ इसमें डाल के ही हम लेके जा रहे थे. And अभी तो मैंने इसको stuff कर रखा है ताकि इसकी ना शेप खराब ना हो. बट यहाँ पे आपको और पॉकेट्स वगैरह मिलेगी. सो अगेन you can really use this bag well. You can carry clothes, books, your accessories वगैरह, ये सब तो आ ही जाएगा, पर इसमें लैपटॉप भी आपका फिट आ जाएगा. अगर आपका 13 इंच टाइप का लैपटॉप है, मेरा मैकबुक 13 इंच का है, तो वो तो इसमें फिट आ गया था. एंड आई ऑल्सो लाइक द क्वालिटी ऑफ द जिपर्स. आई लाइक द क्वालिटी ऑफ लाइक द लेदर दैट दे हैव यूज्ड एज वेल. एंड ओवरऑल आई थिंक दैट दिस वॉज अ गुड बाय. आई थिंक आई गॉट इट फॉर लाइक $250 or something. And if you're looking for good quality backpacks, you can definitely try Coach outlet या फिर Coach का वेबसाइट भी, जो भी आपको सही लगे. इसको तो हमने Krabi में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, and this was full of my essentials plus more things, because when you're traveling ऐसे बीची टाइप के जगह पे ना, you need like a change of clothes, you need extra chappals, you need accessories, you need skincare, you need some makeup and all of that as well. Now speaking of skincare, I was in Krabi, you guys know, and it was literally the best time ever. I had so much fun in Krabi, but Krabi में काफ़ी गर्मी थी. Like I was definitely sweating there, and धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी. And you guys know me, I am always at the beach. I will sit there for hours and hours, watch the sunset, and you know, get the entire vibe. And because I have been sunburnt once really bad, this time I made sure that I take extra protection with me. So I took this Aqualogica sunscreen. This is the Aqualogica Illuminate Dewy sunscreen. This has SPF 50 PA++++. It has a unique water lock technology and also gives you blue light protection. Now this has wild berries and alpha butane, so this not only protects your skin from the sun, but it also helps you fight blemishes and uneven skin tone. One thing I love about this is कि इसका जो formula है बहुत ही lightweight है, and it gets absorbed into the skin very easily. This also gives you no white cast, and that is why I really like the formula. I would highly recommend you guys to check out this product क्योंकि sunscreen बहुत ज़्यादा important है. Everyone should use a sunscreen, no matter क्या weather है, क्या time of the day है. You always need to protect your skin, and you can use my code right here to get 20% off on Aqualogica's website. This is also available on Amazon, Flipkart and Nykaa, but my code is only for Aqualogica's website. I will not get any commission from this code. This will only give you guys a discount. Okay, moving on to bag number 2 by Coach. So this is the bag that I got. This is very famous actually. मुझे पता नहीं था ये इतना popular है उनके collection में. It comes with this strap. Now you can use this strap to obviously hold your bag like this, but इसको आप एक wristlet की तरह भी use कर सकते हो. So इसको आपको ऐसे निकालना है, and then
इट कन्वर्ट्स इनटू अ रिस्लेट एंड एक्चुअली ज़्यादातर लोग इसको रिस्लेट की तरह ही यूज़ करते हैं या फिर इसको पॉपुलराइज वैसे ही किया गया है. I don't like that. I like to use it like this. Now for a bag that is so small, you guys, it fits so much of stuff. It still has stuff. Like you can see how much I use these bags because most of these bags will have something inside. मैंने इसको बैंकॉक में हर दिन यूज किया था and it fit so much. If you guys want me to do a what's in my bag, I will do it for this like shorts में because I really was genuinely surprised to see कि इसमें इतना ज़्यादा सामान है. This is of really good quality. This is canvas, monogram canvas. I think that is what it's called. And यहाँ पे ये मैं first time देख रही हूँ, यहाँ पे ये कोई चार्म लगा हुआ है. So this says what? अच्छा इसमें सिर्फ कोच ही लिखा हुआ है. Okay. And then this is just like the one zipper right here. I don't know the exact price of this. I will mention it on screen. जो भी मुझे prices याद नहीं है मैं वो सब screen में डाल दूंगी. But yeah, overall I really am happy that I got this because I do get a lot of use out of this. This is also a very small bag and I can wear it with like whatever outfits. It's like brown and black, so you know it goes with everything. Like the brown is also very dark, so it's almost black only. Okay, let's now talk about this one sole bag from Zara that I have. This is the very famous Zara bag. A lot of people told me that this was so viral because you could engrave your name. You don't get to do that in India, at least I couldn't. I don't know if it came with another strap. I did not use it. I just have this strap because I think it goes really well with this. I was very happy with the quality. The quality is really good. I also really like the strap because it comes with a white strap and मुझे overall ये bag काफी अच्छा लगा structure quality wise, but इसके अंदर ना स्पेस बहुत ही कम है. Like it does not fit much, so this is not something that I would like to travel with. I took this with me to Jaipur and Udaipur last year with my family and I was really struggling with this bag because it fits so less and I was like what's the point. This one was for 3500 if I'm not mistaken. ये ना Uniqlo का कोई बैग था जो बहुत पॉपुलराइज हुआ था, बट ये मैंने Uniqlo से नहीं खरीदा, ये मैंने कोजा से खरीदा है फ्रॉम मजनू का टिला. आई रियली पर्सनली लाइक दिस बैग. सॉरी इसमें ना यहाँ पे मैंने चार्म्स लगा रखे हैं. ये मेरे ऑलमोस्ट सारे बैग्स में आपको मिलेगा. आई ऑलवेज हैव चार्म्स, चार्म की चेन जो भी आपको कहना है. ये BTS वाला है. मेजॉरिटी बैग्स में BTS से रिलेटेड ही की चेन्स होते हैं मेरे पास. मुझे ऑनेस्टली इस बैग का क्वालिटी यूनिक्लो के बैग के क्वालिटी से थोड़ा बेटर लगा बिकॉज ये ना रिंकल नहीं करता एंड इसका स्ट्रैप वगैरह भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इट इज एडजस्टेबल सो यू कैन कैरी इट एज अ शोल्डर बैग, यू कैन कैरी इट एज अ क्रॉस बॉडी बैग. इसमें एक ही जिप है. यू कैन सी इट स्टिल हैज अ लॉट ऑफ माई सामान. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि इसमें इतना ज्यादा सामान. लाइक यू कैन स्टफ इट टू द ब्रिम, यू कैन पुट वॉट एवर you want to. This bag reminds me of Hermione ka pouch because it has an endless bottom. You can fit whatever you want to and you will still have space for a little something more. So I just find it very fascinating. I got this for only 500 rupees. Uniqlo wala isse mehenga hai, but again I got it from Koja, which is not easily accessible. So of course if you have Uniqlo around, you can definitely go for that. I just wanted to talk about like this. ये क्या हो गया? Just really like the shape of this bag. It's very unique and I definitely don't have anything like this. Okay, the next bag is this. Yes, most of my bags are in black color. Like you will not see a lot of color in my wardrobe in general. This is what my boyfriend gifted me. This is from Lululemon and I think this is called a bum bag if I'm not wrong. I'll show you guys how I like to wear it. So this has a zip यहाँ पे पीछे and यहाँ पे ना मैंने एक बहुत स्पेशल चीज़ रखी हुई है. वो स्पेशल चीज़ मैंने खो दी, सॉरी. बट यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ है, दैट इज़ चश्मा साफ करने के लिए ये क्लॉथ. सो दिस इज़ वेरी हैंडी. इफ़ यू गाइज वेयर स्पेक्स यू विल नो कि कितना काम आता है ये क्लॉथ. एंड सामने से अगेन इट हैज़ all my saman because this is the bag that I'm using currently. I use this almost every single day and इसमें भी इतना सामान आ जाता है. ये मैं Krabi लेके गई थी and Arsh was actually using it all the time there. This was his bag and it's a unisex type of bag, so anyone can use it. It looks very good with western outfits especially, and I just think that it is a very comfortable bag. It looks very chic, it's very simple looking and overall it is small, it's not very chonky, so I really like the way it looks and feels and just like it goes with all of my outfits. And this is my current wallet that I'm using. ये मैंने अपने किसी वीडियो में आपको दिखाया था. This is by Coach. I really like इसका ये जो strap है, it is made of really good quality and you can see how wide this is. I want something जिसमें बहुत सारा सामान fit आ सके. Like if I can only carry a lip gloss and just one other like pin or something, then that bag is of no use. I personally really like Charles and Keith. I think that they have
some of the best bags ever. So this is a bag that I got from Singapore, and to this date I get so many questions about this bag. I'm so sorry guys, this is not available in India. मैंने बहुत स्टोर्स में पूछा इस बैग के बारे में, बट उन्होंने ये बोला था कि ये सिंगापुर के किसी कलेक्शन का बैग है, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है. एंड देन दे ट्राई टू गिव मी एन ऑनलाइन लिंक, बट दिस इज नॉट इवन अवेलेबल ऑनलाइन. सो आई एम रियली सॉरी. आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस इज अगेन वन ऑफ माई मोस्ट यूज्ड बैग्स. आई रियली लाइक कि ये बैग बहुत ही ज्यादा एक तो क्लासी है. आई ऑलवेज कैरी इट लाइक दिस बिकॉज इसका जो फ्रंट फ्लैप है ये यहाँ से खुलता है. एंड दिस इज द की चेन ऑन दिस बैग. दिस इज द माइक्रोकॉस्मोस की चेन. बट या आई क्विकली वांट टू टॉक अबाउट दिस पॉकेट राइट हियर. ये पॉकेट बहुत कन्वीनियंट है. दिस इज अ न्यू की चेन दैट कोमल एक्चुअली गिफ्टेड मी. वो कहीं बाहर गई थी नैनीताल एंड देन शी गॉट दिस फॉर मी. वेरी क्यूट. बट दिस पॉकेट इज वेरी कन्वीनियंट बिकॉज I'm talking to people or something and I don't want to hold my phone. I just stuff it right here and it's just hands free सब कुछ. But if I need my phone, यहाँ से निकाल लिया. No, ऐसी चीजें ही ना, it makes or breaks my day. I cannot even tell you that this Zara bag frustrated me so much in Udaipur and Jaipur. My sister was like, what are you doing? Like, you look so mad right now. I was like, I am mad. Coming back to this bag, I really like this handle. The handle is also very unique. Everything about this bag is very unique and that is why I like it so much. Now it has a zip yahan pe bhi. So again you can keep a lot of stuff right here and then you have this big compartment and इसमें भी मेरा इतना सामान है. I swear to God, I am shocked कि मेरे हर बैग में इतना सामान कैसे है. I have multiples of like these lip balms everywhere and यहाँ पे एक छोटा सा एक और compartment है. So this bag is so functional. I can carry my entire world in this. Like, you need a pad, I got you. You need a lip gloss, I got you. You need hand cream, I got you. You need a sanitizer, I got you. Then I can stuff my phone. I can carry a perfume. I can carry something to eat like a snack. So I just love this bag so much and I got it on sale. I remember I got it for 3500 rupees, same price as the Zara bag, but this again will win the race every single time. And to be honest, this is my favorite bag. Like, out of all the bags that I have, this is my go-to bag. Whenever I take this out, I get compliments and this goes with literally every single outfit. And I like to keep my bags in their dust bags. Okay, the next bag from Charles & Keith that I have is this one right here. I really love the way it looks. एक तो इसमें ये जो dark pink and light pink का जो combination है ना, it is very different. It looks like a strawberry to be honest. And इधर भी cookie का keychain. I thought it is very fitting. Now this is from the Itsy collection. This also has stuff. Oh my God, let me empty that out. काफी स्पेस इसमें. नाउ दिस डज नॉट फिट क्रेजी अमाउंट ऑफ स्टफ, बट इसमें मेरे सारे एसेंशियल्स फिट आ जाते हैं एंड दैट इज व्हाट आई वांट. एंड इट इज जस्ट अ वेरी यूनिक बैग. दिस इज नॉट अ बैग दैट आई विल कैरी एवरी सिंगल डे. दिस इज अगेन फॉर इवेंट्स या फिर स्पेशल ओकेजन्स एंड एज लॉन्ग एज इट फिट्स माई एसेंशियल्स देन आई एम हैप्पी एज इट इज. इसको लास्ट मैंने बारबी के इवेंट पे यूज किया था एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दैट डे एज वेल. सो या, आई थिंक दैट दिस बैग जस्ट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ. आई थिंक आई गॉट इट फॉर 6,500 something like this. Matlab, it was not too expensive but it was not cheap either. Okay, last Charles & Keith bag is this one. I think I had more but I can't find them. I don't know if my mom has them or what, but मुझे अभी नहीं मिल रहे वो. Maybe मैं वो सब part 2 में दिखाऊंगी, or maybe these are the bags that I have. So this is from Charles & Keith again. Now this is in this really nice chocolate brown color. थोड़ा से greenish brown मुझे ये लगता है. And इसका ये जो strap है, it is very unique. ऐसा लगता है यहाँ पे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं. सो इट रियली मैचेस माई वाइब एंड दैट इज व्हाई आई गॉट इट. आई रियली लाइक द look of this bag. This strap does hurt my shoulder and this is how I figured out that I should never buy a bag with इतना पतला strap. ना इसके अंदर काफी सारा सामान आ जाता है. You can see यहाँ पे एक छोटा pocket है, then there is so much of space. इधर भी कुछ रखा हुआ है, tissues रखे हुए हैं. Here is another compartment. यहाँ पे एक zip वाला pocket भी है, so it can fit a lot of stuff. It does not come in a proper lock. It just comes in ऐसे ये जो tick वाला button नहीं होता. Another thing that I like about this is that you can take off the straps and then it just becomes like a clutch. Like ऐसे आप उसको हैंड बैग की तरह यूज कर सकते हैं. हैंड बैग की तरह यू कैन जस्ट कैरी इट लाइक दिस, यू नो व्हाट आई मीन. सो इट लुक्स वेरी नाइस. ऐसे भी इसका ना साइज बिल्कुल परफेक्ट है. सो दिस कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन वेज एंड दिस ऑल्सो एक्चुअली आई यूज्ड अ लॉट लास्ट ईयर.
I had this whole phase where I used only this bag. My mom actually used this bag a lot as well, so I got a lot of use out of this, and that is why I really wanted to show you this. Okay, I have this bag right here, and this is a शोल्डर बैग. इसमें ना एक्चुअली एक बड़ा स्ट्रैप भी था जिससे मैं इसको क्रॉस बॉडी की तरह यूज करती थी, बट I don't know where that is. I did not misplace it, but I also can't find it. Anyway, this is by Mango, and this bag I have used to death. Like I cannot even tell you how much I've used this bag. I think एक point आ गया था जब मैं सिर्फ इसी बैग को यूज करती थी, and इसमें कोई wear and tear ही नहीं है. Like अभी भी it just looks brand new, which is so shocking to me. Oh, by the way, I forgot to tell you ये कितने का था. I think this one was for 8,500. ये महंगा था उससे. Now looking back, I'm just like maybe it was not worth it after all. This black faux leather bag that I got, this is from Mango. I got it for like 3,500, 3,600, something like that. मैंने मिंत्रा से इसको ऑर्डर किया था. अभी तो I have to carry it like this, like a शोल्डर बैग, बट ये क्रॉस बॉडी में जब था ना, इट वॉज इवन बेटर. ये लगता बहुत छोटा है, इसके अंदर पैसे भी है. वाओ, लगता है कि इसमें कितना ही सामान आ जाएगा, राइट? रॉन्ग, इसमें बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है. देयर वॉज दिस टाइम वेर आई ओनली यूज दिस बैग, लाइक almost every single day. Whenever I went anywhere, I would carry this bag with me, and I think मैंने जितना मुझे पैसा वसूलना था मैंने सारा वसूल लिया है, बट मैंने इसको अभी भी रख रखा है because of course I can use it इधर उधर अभी भी. Even now I reach out for this bag, and I totally think that this was worth the money. Actually, I'm proud of myself that I've kept everything in good condition. Like even when you look at it right now, there's not a lot of wear and tear, and I really like to keep my things अच्छे से, so that you know if I want to like donate it, or if somebody wants to borrow it from me, या फिर मैं किसी को declutter में दे दूँ ये, so at least वो अच्छी condition में रहे ताकि वो उसको use कर पाए. I don't want to use it in a way and उसका quality पूरा deteriorate हो जाए ताकि कोई और use ही ना कर पाए. So I make sure कि मैं अपने सारे bags को अच्छे से रखूँ, and that is just something for you too. If you have a big collection of anything, make sure that at least you keep everything in a good way, so that if you want to declutter, donate or whatever, you can donate good things rather than like broken things or worn out stuff. You get what I mean. Okay, the last bag in this video is a bag that I have never talked about, but I've used so much, and every single time I use it I get questions कि ये कौन सा बैग है, कब लिया, आपने कुछ बताया नहीं. इसकी बैक स्टोरी मैं अभी बताती हूँ, but this is my first and only designer bag, and this is by Louis Vuitton. This is by Louis Vuitton, and this is what it looks like. अभी ये पूरा खाली है, but yeah, this has my Chimmy. This is my Chimmy keychain, and I really like this bag. So this is something that I saw a video of. Okay, I saw someone do a what's in my bag video back in लास्ट ईयर 2023 था, 2022 के एंड ऑफ द ईयर में किसी का व्हाट्स इन माई बैग वीडियो देखा था, एंड दे वर यूजिंग दिस. सो दिस इज कॉल्ड द बुलोइन बैग, एंड मे बी आई एम बुचरिंग द नेम, आई विल मेंशन द नेम right here. Anyway, so I saw the bag and she said that this is something that she uses every single day, and I really like the bag. जब उसने दिखाया उसमें इतना सामान फिट आया था, and just like the overall look and feel of the bag I really liked, so I wanted it तब से ही. Now this is not your trendy bag, this is not one of the best sellers or anything, this is just like in the catalog. So when I asked India में कि ये बैग है कि नहीं, they were like we only have one piece या फिर order करवाना पड़ेगा, because again this is not a trendy piece or anything. So I was just like okay, I'll probably get it later. But then my Korea visa got rejected. I was heartbroken, and I was like I need to cheer myself up, and that is when I placed an order for this, and that is how I got this bag. So I got it in 2023 around my birthday, around that timeline only. So you have all the backstory that you wanted to know. But yeah, this is what the bag looks like. Here you go. So this is again in the canvas, monogram canvas, and यहाँ पे ये leather का trim है. The strap is of leather, and this bag, oh my god, first of all why I like this bag so much is इसका ये जो strap है ना, so this you can use normal ऐसे like a shoulder bag. Now when you open the titch buttons, यहाँ पे side में इसके buttons लगे हुए हैं, and then you open them. एक सेकंड, मैंने कुछ गलत किया है. नहीं गलत किया. रुको, मुझे लगाने दो इसको यार, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. And after adjusting it a bit, you can turn it into a cross body bag. Once I put in stuff, तो उसका shape normal हो जाता है. And to be honest, I am not that anal about stuff like this. Like
उसका अगर शेप थोड़ा इधर उधर ऐसे हो गया, इट्स अ बैग होगा ही। मैं तो वैसे भी अपने बैग्स को बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। द रीजन आई गॉट दिस वॉज नॉट बिकॉज ओ आई सॉ लग्जरी बैग एंड आई वॉन्टेड अ लग्जरी बैग, आई सॉ दिस बैग एंड आई लाइक्ड इट सो मच कि ये अगर चार्ल्स एंड कीथ का भी होता तब भी मैं ले लेती। इसके अंदर इतना सामान फिट आता है, इट्स नो जोक। आई कैन फिट माई कैमरा, माई फोन, देन मेरे छोटे मोटे असेंशियल्स एंड एवरीथिंग फिट्स इन इट सो वेल। मैंने अपना ट्राईपॉड तक इसमें ठूस रखा है। जब मैं बैंकॉक गई थी लास्ट ईयर, आई जस्ट समहाउ फिट एवरीथिंग इन दिस। इसके अंदर ये बड़ा सा पॉकेट है एंड देन यू हैव अ लिटिल पॉकेट राइट हियर सो यू कैन कीप योर असेंशियल्स। ऑनेस्टली आई हैव यूज्ड दिस क्वाइट अग्रेसिवली बिकॉज मैं जब बीच वगैरह पे गई थी तो मैंने ऐसे अपने बैग को इधर उधर फेंक दिया था एंड आई वॉज जस्ट लाइक हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ। इज बिकॉज इट्स अ बैग एट द एंड ऑफ द डे, सो आई कैन नॉट जस्ट बी लाइक ओ आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। अगर एक बैग को इतना ध्यान रखने की जरूरत है देन मैं वो बैग यूज नहीं कर सकती। सो फॉर मी द biggest plus point about this bag, and even then its quality is top notch. Of course they charge you a bomb for these bags, but I was really happy because it is such a functional bag and again I can utilize it in so many ways and I don't have to handle it with like utmost care and ऐसे कि you know हाथ लगाओ तो खराब हो जाएगा टाइप की चीज नहीं है ये। It comes in this fancy dust bag. Oh, it also came in with this chain, जो चेन आप इसमें लगा सकते हो। आई डोंट यूज इट बिकॉज मुझे थोड़ी टैकी लगती है, थोड़ी नहीं मुझे बहुत टैकी लगता है ये। इट जस्ट कम्प्लीटली रूइंड द लुक ऑफ द बैग फॉर मी। आई डोंट यूज दिस चेन एट ऑल। आई डोंट थिंक कि ये चेन इसके साथ अच्छी भी लगती है बिल्कुल भी। फॉर मी पर्सनली दिस हैंडल इज परफेक्ट। वन थिंग आई वुड से दैट इफ यू आर एवर बाइंग अ लग्जरी बैग फॉर योर सेल्फ, ऐसा बैग लो जिसको आप बहुत अच्छे से यूज कर पाओ। अगर वो बस एक ट्रेंडी पीस है जो आप बस एक सीजन चला सकते हो और उसके बाद इट विल गो आउट ऑफ स्टाइल, या फिर you know what I mean, like वो जो न्यू कलेक्शन टाइप के बैग्स नहीं होते हैं, आई डोंट थिंक वो लग्जरी बैग्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अनलेस यू हैव दैट टाइप ऑफ मनी जिसमें आप मल्टीपल्स खरीद सको। बट इफ यू जस्ट वांट लाइक 1 or 2 लग्जरी बैग के आइटम्स, आई थिंक यू शुड बाय बैग्स जो बहुत फंक्शनल हो एंड यू कैन गेट मल्टीपल यूज आउट ऑफ देम। एंड वो आपको ना उनके कैटलॉग में जाके अच्छे से सर्च करके ही पता चलेगा, या फिर मेरी तरह आपको कोई रैंडम व्हाट्स इन माय बैग दिख गया तो, बिकॉज उनका जो वो मेन पेज होता है ना उसमें तो हमेशा यू विल सी जो उनका न्यू कलेक्शन होता है। बट इफ यू वॉन्ट टू सी बाकी के डिजाइन देन यू विल हैव टू गो एंड बहुत रिसर्च करके आपको देखना पड़ेगा, बट इट्स वर्थ इट। आई बॉट इट फॉर 1.6 lakhs, so it is up there. Back then I was heartbroken and I was just like it's okay, I could not go out, so मैंने अपना travel money अपने बैग में लगा दिया था। And to be honest I don't regret it because I have got so much use out of this and I will continue to use it. I really like the design and everything as well, so I don't regret buying this bag. So yeah, that is the last bag in my collection and I hope you guys enjoyed watching this video. You guys, I had so much fun filming this. I have been filming this for over an hour right now and I just had the time of my life. If you guys like this video, let me know in the comments down below कि आपका कौन सा favorite bag था. I would love to know that and let me know if you guys want to see a part 2. I would love to do that as well. Don't forget to check out the description box for all the links. Don't forget to subscribe before you leave and I will see you guys in my next one. Bye bye.